Hello, everyone. Welcome back to today's online session organized by Jabalpur Smart City and Jabalpur Incubation Center. In today's session on selecting the right startup metrics, I am Ankit Rajak, host for today's session, and we are very delighted to have a speaker, Mr. Supreet Agrawal. So we welcome Supreet for today's session on behalf of Jabalpur Smart City and Jabalpur Incubation Thank Center. you so much. Thank you so much. Okay, so dear startups and all the participants who join today's online session, we have very important session today on startup metrics and key KPIs, right? So as a startup, you always need to know and decide the different key performance indicator so that you can track your performance as well as you can prepare the strategy for your next action. Startup metrics play a very important role when you decide the next course of action, right? You must have some sort of data driven approach so that you can track your performance as well as you can achieve your decided revenues and other parameter. So today we have Mr. Supreet Agrawal as invited resource person. Let me quickly introduce our today's speaker. And Mr. Supreet Agrawal is a CA and founder of the Land of Learners. He worked in audit and assurance department in multiple firms, including EY India and KPMG Bahrain. Under the initiative of the Land of Learners, he provide training of ACCA, IIM Indore, and USCMA student, as well as he also runs number of finance related certification course. So we really believe with your present number of startup will going to learn how to design their startup metrics and how to decide the number of important KPIs. So let's start, Supreet. Thank you so much for your kind introduction, Ankit, first of all. Before starting with the topic, I would just like to know whether there's a chat option available for our viewers. Yes, yes. Chat option is available, and we can have chat questions between the session, or we can have some sort of Q&A session at the last 10 minutes. Definitely. So I would request all the participants. So whenever you have any queries, I would love to answer them between the session or after the session. So whenever you have any queries, please feel free first of all to post it then and there. Don't wait for the last moment to post it. Please post it then and there, and then we will see that when we can answer it before closing the sessions. Now, starting with the introduction and the importance of these metrics and key KPIs, I would first like to introduce you with the concept of these KPIs. So KPIs stands for key performance indicators. Since you all are startup runners and you all are entrepreneurs, so I can assume that you all are aware about the meaning, the basic meaning of key performance indicators. Although I would like to throw some light on some of the key performance indicators that we are going to study about today and the importance of them. So before diving into the topic of what all KPIs or what all metrics we are going to study about today, let us just first understand the importance of these KPIs for our business and startups. These KPIs are very much important for an established business, but it is even more important for a startup to see these KPIs on a regular basis and to make the further improvements if required. Because when we see the word KPI, the first word is key. That is, does not derive our performance in the startup world, but these are very key to our own performance as well. So it is very much important for us to understand the importance of these KPIs first. So these KPIs, all of the KPIs that we are going to study about today, and the other KPIs that we are not going to study about but exist in the market, tells you the financial health of your company. Even more than the financial health, it goes beyond the concept of just financial health, and it also tells you about the key performance indicators of your company as well as the key health indicators of your company. That is, whether your company is incorporated in the healthy manner or not, whether your company is performing in the healthy manner or not, and whether your vision that you see for your startup would be able to achieve it or not. All these factors could be analyzed, could be judged,
as well as evaluated and further improved as well through these KPIs. So before diving deep into the topic of what all KPIs we are going to study about, I would just first like to give you a brief introduction about these KPIs. So the common point among all these KPIs is that these are not just one-time exercise. These are iterative process, these are continuous process, and you need to do it periodically. Please mind the word here that I'm not saying annually, quarterly, or monthly, but you have to determine for your own startup whether you need to do it on a daily basis, whether you need to do it on a monthly basis, whether you need to do it on a quarterly basis or an annual basis. So the performance, the performance evaluations through all these KPIs depends on your particular startup, and that is why whenever we would be studying about any particular KPI, we would throw some light on for which industry it is most relevant and for other industry how they can use it. So with this, we should start the session now. So the basic metrics that we are going to study about here would depend on all the startups and would be applicable on all these startups because these are just the basic ones. And if you are using some of them, please feel free to ask your queries regarding it if you have any. If not, then I would suggest you to start using it on your startups so that you could regularly and periodically see whether your vision is being met or not. And if not, you could incorporate further procedures to establish a procedure that would help you to achieve your objective. So the basic metrics that we are going to that we are going to learn about today is the monthly recurring revenue, the annual recurring revenue, the compounded monthly growth rate. It is not compounded annually growth rate that we just understand at CAGR. It is compounded monthly growth rate, which is a new one. Then revenue. The meaning of revenue is somewhat misinterpreted sometimes. So that is why it is really important for us to understand what do we mean by revenue. Now, revenue is also classified into two parts, gross and net. So we would be understanding about that. After that, average revenue per user. This is really important for us to understand why we would be understanding in that particular section. Then customer acquisition cost. All of the startups that we see today incurs a heavy cost regarding customer acquisition, and that is why it is really important for us to understand not just customer acquisition cost but the cost related to that or the analysis related to that, which might be customer lifetime value, which is also covered in our session, the churn rate, which is also covered in our session, and the cash burn. These all are related somewhere to understand whether we are incurring losses while acquiring a customer, whether these are short term losses or the long term losses, and that is how we are going to analyze it. After that, we would also be understanding about the user retention ratios, the profit margin ratios, and the runway. If you ask me, from my personal point of view, what is the most important metric out of all these? That would be runway. Even if your customer acquisition cost is very high, even if you have low monthly recurring revenue, even if your customer lifetime value is very low, but still, if you have good runway, then you would at least be able to survive if not grow. So that is why, if you ask me from my point of view, the most important metric of all these things is runway. Because if you don't have runway, even if you have good annual recurring revenue, you might not be able to survive for long. Even if you have good growth rate, you might not be able to survive for long. This is from my point of view. You can have different opinions about it, and I would love to know your opinions about it also. So with this, let us start the understanding of what the first metric that we are going to discuss about, because we have 1 hour. So I would request that we focus on the metrics first, and so that we could have significant time available for us to take the queries, to take the discussion points, and we do not run short of time for that. So that is why the first revenue that we are going to study about is the monthly recurring revenue. Now, I would like to explain here that all of these metrics might not be directly applicable to every startup, but it is very important for us to understand it because, as per some of the international reports, it is being showcased, or it has been displayed, or it has been disclosed that as of now, if you sell one product, if you sell one product for a fixed amount, and if you sell that product only for a subscription model, then it has a higher chance of selling more amount of value, as in more volume, as well as more amount of revenue in the subscription model, because there are different eras for all kind of revenues, and this is considered as the era of subscription, where subscription model works. If you look at your personal rates also, you might be using a lot of monthly recurring subscriptions like Netflix subscription, like Amazon subscription maybe.
There are a lot of subscription models that are being run by different startups throughout the world. Even established companies run subscription model. That is because as of now, if we look at the ecosystem, the recurring revenue system or the subscription model that we understand from the consumer point of view is growing, and a lot of companies are involving into the subscription model instead of selling for the one time thing. So it is really important for us to understand the meaning of this monthly recurring revenue. And before moving into the understanding of monthly recurring revenue, which we commonly call as MRR, let us first understand the meaning of the word recurring. When we say recurring, recurring means repeated. That is something when it is repeated on a continuous basis, then it is called as recurring. In business, we have certain cost also, capital cost and recurring cost or revenue cost. That is the cost that gets repeated a lot of times or multiple times. That is called as recurring cost. And that is why the meaning of recurring revenue is that revenue which is getting converted again and again. So the monthly recurring revenue, the concept of monthly recurring revenue is that you charge your customer on a monthly basis. Imagine some of the metro cities, okay? As of now, this concept is not very widely used in Jabalpur, but if you see some of the metro cities, then you'll see that even for the very smaller part of their life, say milk, they have subscription models available, they have monthly subscription models available, the coupon systems available. That is, you will be paying on a monthly basis, you don't need to pay on the daily basis, you don't need to do anything, you just need to pay a fixed amount, not variable. You have to pay the fixed amount. Even if you don't take the milk, you will have to pay that amount to the vendor. That is called as monthly recurring revenue. Now, how is it very important for your startup? Because every time I have seen one interview with a very renowned entrepreneur, and what he told was that every month he receives a finance sheet, he gets to know the profits, he gets to know the revenues, and he gets to know every single data. But the problem is that after reviewing that finance sheet, he again has to work that hard only. He has to run the same advertisement cost, sometimes even more. He has to attend the same number of seminars, the same number of conferences. S- in short, he has to work similarly or equally hard to get the revenues in the next month only. So what he suggested was that if you have a recurring model, at least you will have that money secured, that kind of revenue secured, and then you whatever you work hard on, that would be an additional revenue in the current month. But if you don't have a recurring model in today's era, then every month you have to find your customers, you have to sell your product to the customers. If your customer doesn't buy your product, then your revenue would be lower. And that is why it is said that if you have a strong recurring revenue, that is subscription model in place, then you'll have some kind of revenue fixed, and then you can grow it on a monthly basis. So this is directly proportional, or this is directly related to that kind of metric that we are going to study about, which is called as compounded growth, that we are going to study about later on. So this is directly related to that. Now, for which kind of industry is it possible? Is it possible for all kind of industries? Definitely no, it is not at all possible for all kinds of industries. For example, I deliver classes related to ACCL, like Ankit sir told, right? So I cannot give a subscription model that you receive my classes or you take my classes for 1 month, but you don't take it for next month. You have a choice to go out next month. In that, student would not be prepared for the examination. So in my model, it is not at all applicable. It is not at all applicable that I cannot charge monthly recurring revenue. Although when I provide short-term recurring courses, say 1 month, say 15 days, say 20 days, then I could give them the recurring revenue model, or I could introduce the recurring revenue model and charge a fixed fee. That is, even if you want to attend one class this month, one class next month, that is completely fine to me. But I cannot do it for the professional courses. So that is why you need to understand that monthly recurring revenue might not be applicable to all industries. But if you are able to introduce this concept of MRR, which is monthly recurring revenue, in your startup or in your product, then whatever you work hard on this current month would be an additional growth for your startup, and would help you to grow your business even further at a very high pace. If you see, Amazon is working on the same thing, Netflix is working on the same thing, and all the bigger startups that you see right now, or all the bigger establishments also that you see right now, are working on the subscription model. Whosoever is not working on the subscription model, if there's an industry, for example, e-commerce, Amazon is working on Amazon Prime, but Flipkart is not working on it. So you'll see that Amazon Prime is growing even further, right? So it is really important for you to be in the competitive edge and grow a recurring revenue for yourself.
so that whatever you work hard on would be an additional revenue. Now, there's an example given to you. So, I'm not at all a believer of formulas, although, but what I can explain you is the concept behind it. So, before reading the formula, let us first understand how you can calculate MRR. So, imagine a scenario where you have 1,000 customers available for your product. Okay, you are able to acquire 1,000 customers, and each customers pay you just 100 rupees a month, which is not a significant amount for any of the consumer in India, at least for some level of people. It is not at all a big amount. So if they pay you 100 rupees, that is 1 lakh of monthly recurring revenue for your startup. And that way, you will be able to clock a revenue of at least 12 lakhs per annum. And whatever you work hard on in the following months, that would be an additional revenue for yourself. Unless, of course, your subscribers disenroll or move out of your startup, it is a fixed kind of revenue for yourself. And that is why it would be very crucial. Now, moving to the next one, which is annual recurring revenue. Is there any online tool? So there are certain questions, very important topic for a startup. Yes, definitely. What is the initial stage of a startup when we need to prepare these metrics? You should prepare these metrics from day one, because from day one you should know about your churn rate, you should know about your burn rate, you should know about, even before starting, sometimes even before starting, when you are projecting your revenue, when you are projecting your idea, when you are creating a pamphlet, when you are at least in the research stage, then also you should use these metrics, because it is really important for you to have the projected model for your startup. That is, whether your product is going to work fine or not. For that, you run surveys. So in that survey, there could be one questionnaire that might ask you, or that might ask the consumers, whether or how much amount they would be willing to pay for this kind of a product on a monthly basis. So this is not just important after you start your startup, but it is equally important to know about these metrics and use them on your daily analysis, even before starting your startup on a formal basis. Okay, then the next question is there any online tool to calculate these key metrics? There's no single tool that I would say, but yes, there are multiple tools available, although I'm not aware of any of the authorized tools, so it would not be right to refer anyone here. But what you can do is, you can run all of these metrics on Excel, because it is really a feasible method. And all of these metrics does not involve any of the very complex calculations, so it is very much possible for you to run it on Excel. Plus, I would also suggest you not to use Google Sheets for your confidential startup data. So unless you have a very strong authorized person or authorized website which provides you the data for these key matrices, I would personally recommend you not to use your startup confidential data and upload it on Google to find out the key metrics. That would be my personal advice to you. Now, coming to the annual recurring revenue. I hope this answers your question. If not, please feel free to write. So, annual recurring revenue. Similar to what we studied about in the monthly recurring revenue, there are some startups which run on the annual recurring revenue. Like Netflix allows you the option to pay on the monthly basis. However, there's also an option to pay on the annual basis. Similarly, if you go for Amazon Prime, there's no option to pay on the monthly basis, but there's only an option to pay on the yearly basis, which is a very low amount, say 999 rupees. So you have to determine for your startup whether monthly recurring revenue is fine for you, whether annual recurring revenue would work for you, or whether you need to introduce both. For example, I'll just tell you one quick strategy about Netflix that I am aware about. So what Netflix does is, they introduce you three plans. One is for the monthly basis, one is for the annual basis, and one is for the 6 monthly basis. However, if you look at it, you will find that the cost of the monthly revenue or the monthly cost is much lower than the annual cost, because they don't want you to buy the annual rev- uh, subscription cost. They don't even want you to buy the annual subscription cost. They have just kept it there to let you know that you have options, and they only recommend you the monthly basis because they want monthly revenue, because they can change it anytime. If they charge you 199 or 1999 for an year this year, then they cannot change it for until next year. But if they charge you on a monthly basis, then they could change it any month. And since you are very much obligated to see, now you have a habit of seeing Netflix, now you are able to buy it even if it's from 199 to 499. It has happened with all of us. When the Netflix cost went from 199 to even 499 per month, we actually bought it. A lot of us bought it, and actually the revenue of Netflix has increased.
So what they do is they provide you with the options. You must have heard of the Pepsi and Coca-Cola strategy, that they open their stores or vending machines just beside each other. So now the question is not if there would be just one vending machine of Coca-Cola. The question is whether you want to drink cold drink or not, or drink soft drink or not. But when there's a Coca and Pepsi beside each other, then the question is whether you want to drink Coca-Cola or Pepsi. You subconsciously decide that you want to drink cold soft drink. Now the question is whether you want to drink Pepsi or Coca-Cola, and as a result, nobody's sale is hampered, but all of them grow together. So that is a hidden strategy that Pepsi and Coca-Cola also uses. So that works in the annual recurring revenue also, that you provide options and then you recommend one which seems more feasible. So now the question is not whether they want to go for the subscription model or not. The question is which one they want to go for. So that is how you can use monthly recurring revenue and annual recurring revenue in your own startup. Now moving further, we have understood monthly recurring revenue and annual recurring revenue. But the question is, what do we mean by revenue? Does every amount that we receive is a revenue? If we sell our property and receive certain amount, is that a revenue? The question is that what is actually considered as a revenue? So there are two kinds of products that we sell. Either it could be either a product. There are two kinds of things that we can sell. Either it could be a product or it could be a service. So the money charged to provide goods or services would be called as a revenue. Now, do you all know what is the difference between gross revenue and net revenue? Anybody? If anybody is available, gross revenue and net revenue. Any difference that you are aware about? Supreet, let me add one thing. Yeah. Startups, you can have your live record on your data. आपका जो डेटा है आप एक रफ स्केच में नोट डाउन भी कर सकते हैं, so that at the end you can have real question on your data, right? And you Okay. can note down the key points, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड जब भी आप अपने स्टार्टअप्स को डेटा ड्रिवन बनाते हैं तब देयर मे बी अ मोर चांसेस दैट यू हैव द एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी फॉर योर सक्सेस एंड फॉर टू अचीव योर टारगेट्स, राइट? यस सुप्रीत, Def- वी कैन कंटिन्यू नाउ. Definitely. Yeah. So I'll just give you one example to understand this concept of gross revenue and net revenue. Because if we have certain data, then our mind would be definitely understanding it in a much better fashion. So let us assume that you have clocked the sales of say 1 lakh this month. Okay. But the problem is that you also provide one option to the customer that they can come in 10 days and return your product and claim the refund. Now the question is, which revenue would you book in your books? Is it 1 lakh rupees or is it 90,000 rupees? That is really important to understand for us. Also, there might be certain scenario, there might be certain scenario where what you might be doing is you might be receiving money of 1 lakh rupees, but you provide cash discount, as in the revenue is of 1 lakh rupees. You have sold the product worth rupees 1 lakh, but to claim or to recover the money from the customer, you provide certain cash discount. That is, if you pay upfront on cash, I'll provide you say 2% or 5% discount. So the question arises, which would be recorded as your revenue? So it is very much important for us to understand this gross revenue and net revenue for that. Gross revenue means that the money that you have gained or that you have generated, not received, generated or earned by selling your products or services. You could only sell products or services. So whatever money you earn or you clock by selling your products or services, that is considered as your gross revenue. That is without any deductions, without any adjustments. But when you move towards the net revenue, then it talks about the meaning of net revenue, talks about that what is effectively generated in your startup or in your business. As in, if you have clocked a revenue of 1 lakh rupees, but while receiving or recovering money from your from your customers, if you have given them 2% discount, then your revenue is not 1 lakh rupees but only 98,000 rupees. That is deduction of 2,000. Also, some of your customers, say worth rupees 8,000 rupees, have come to you and claimed a refund, and you had to refund them because of your refund policy. In that case, that 8,000 rupees is also out of your revenue, and now your gross revenue would be 1 lakh rupees only, but when you come to the net revenue, it would be only 90,000 rupees. That is after adjustment. So the difference between gross revenue and net revenue is the adjustments. Now it is more important for us to understand that what all could be these adjustments. So this could be sales discounts, this could be trade discounts also, this could be cash discounts also, this could be sales returns also, this could be damaged products also.
delivery of damaged products also. So there might be innumerous adjustment that might be between gross revenue and net revenue. But the core theme of every of these adjustment, each of these adjustments is that gross revenue is the money generated or earned in the business, whereas net revenue means the exact amount that you have received on a net basis after all adjustments. Okay, so that is the meaning of gross revenue and not net revenue. Now, moving further to direct and indirect costs, it is really important for us to understand the cost as well, because it is not just important for us to generate revenue. There are multiple startups that you can see in the startup world. I won't name them here in this professional platform, but there are multiple startups that you might be aware about who are generating huge amount of revenue, huge, thousands of crores maybe. But when you look at the profitability statement, they are not generating profits. They are maybe not even growing their revenue, but they are growing their losses. So that happens because the one of the most important key performance indicator is your cost also. Because if you focus on the top line, that is revenue, that is really good, because that would help you to reach more and more customers. But if you don't look at your bottom line, then your startup might not be able to survive for long. And that is why it is really important for us as the startup entrepreneurs to look at our cost at, in fact, it is really more important to understand cost in the initial stages of our startup, because any startup goes through the introduction stage also, growth stage also, maturity stage also, and sometimes decline stage also. And that majorly depends on your cost also. So that is why it is really important for us to understand the meaning of direct and indirect cost. Now, to explain this concept, I'll take one example here. Okay. So if I'm a production facility, okay, I'm a manufacturing facility. I have a big factory available to me. Okay, I have rented a big factory premises. I have bought certain machineries. Okay, so I am incurring a total cost of say 1 crore rupees, out of which 50 lakh is the factory rent. Okay, 10 lakh rupees I pay to the workers. To all the workers, 10 lakh rupees is sufficient. I pay on an annual basis 50 lakh rupees of rent, 10 lakh rupees of workers fees. I charge depreciation of 10 lakh rupees again, and my profit is 30 lakh rupees. Imagine that this is the only profitability statement that I have. Revenue of 1 crore rupees, rent of 50 lakh rupees, worker fees is of 10 lakh rupees, worker wages is of 10 lakh rupees, and depreciation is of 10 lakh rupees, and rest 30 lakh rupees is my profit. Now, it is very much important for us to understand that which cost is avoidable and which cost is not avoidable, because the classification between direct and indirect cost, it's in itself does not evaluate anything for us, but it helps us to evaluate which costs are avoidable and which costs are not avoidable in case of requirement. So for example, in this case, if I tell you that a product is not getting sold into the market, we are maybe not able to generate 1 crore of revenue in the following months. Now we have to reduce our cost. Okay, we have to reduce our cost. Now which cost would you reduce? The 10 lakh workers fees? Can you reduce it? Maybe you can, maybe you cannot, depending on your product volume. If your volume is getting sold but revenue is not getting generated, then you cannot reduce your workers cost. But if I ask you, can you at least reduce your factory fees? Can you at least negotiate that your rent of 50 lakh rupees comes down to maybe 40 lakh rupees, so that you are able to cover up your labor cost? That happens. So that is why it is really important for you to understand the concept of direct and indirect cost. So anything that is directly related to your product is called as direct cost. For example, if you are manufacturing a product, the labor cost who are actually working on that product is the direct cost. That is, if you hamper that cost, then your product would be directly impacted. That is called as direct cost. Whereas in this case, in our example, if we talk about the factory rent, it does not depend whether you're establishing a factory here or there. The main motive is the factory. So your factory rent is not directly related to your product cost, and that is why it is called as an indirect cost. That is something which is maybe avoidable, or at least you can reduce it. So the meaning of direct and indirect cost is something that is directly related to your product is direct cost, and something which might not be directly related to your product is called as indirect cost. In my case, when I run a coaching empire, I hire certain faculties. Okay, I hire certain freelancers who work for preparation of my books, but I also have a premises. Now the question is,
which one is a direct cost and which one is an indirect cost, which one I can avoid or at least reduce, which one I cannot afford to reduce, because it is directly related to either my products or my services. In this case, the faculty fees that I pay, it's directly related to my business, directly related to my services. So in this case, direct cost would be faculty fees. Whereas the coaching premises that I have is an indirect cost. The rent for it, the depreciation for it is an indirect cost, because that could be reduced and that is not directly related to my services. Okay. I hope the concept of direct indirect cost is clear. Now let us move further. Let us see if there are any questions. So gross revenue means total business money. Yes, that's great, but not the money. That is called as net worth. When we say total business money, that is maybe the net worth. So here, gross revenue means total income generated in a year or in a period. Okay, generated, not received. Is indirect cost changes from time to time? Definitely yes. In this case also, if you see that our initial rent cost was 50 lakh rupees, but now you negotiated because your business was coming down, so now you negotiated on a better terms from a position of strength, and then you came and then it came down to 40 lakh rupees, so definitely it could reduce. There are certain licensing fees also, some insurance fees also, which changes from time to time, which is not directly related to your products, so that might change from time to time. I hope that answers your query. Now let us move to the another important matrix, which is considered as one of the crucial. If you look at your P&L statement, direct and indirect costs would not be reflected there directly. But something that is reflected there directly is cost of goods sold or cost of sales. And that is why it is really important for us to understand cost of goods sold or cost of sales. As of now, for all the points that we have studied so far, I haven't told about any particular industry, because it is applicable to all of them. Monthly recurring revenue and annual recurring revenue was some industry specific things. That is why I named certain industries. Now, cost of goods sold. It is also applicable to all industries. Is it applicable to service industry also? Doubtful, because in case of all service industries, you will not see a component of cost of goods sold in their P&L statement. Although it is there, but it is not a formal accounting term that is used for service class, because we do not sell goods, we provide services, as a result of which cost of goods sold would not be seen in any of the services startup. Okay. So now, first of all, we have to determine whether it is a direct cost or an indirect cost. Cost of goods sold. Cost of goods sold. The name suggests that it is cost incurred to sell the product, not just to sell, but the product that has been sold. What is the total cost on that? What is the total cost on that? So it is considered as the direct cost, because it is directly related to your product, and as a result of which it could be understood as a direct cost. That is first point to be noted, that it is a direct cost. Can you afford to lose on your cost of goods sold? Can you reduce it? You can reduce it through planning, but you cannot reduce it through losing of money or to save budgets. You cannot reduce it with that motive. If you want to reduce it, you can reduce it with better planning, with better technology. So it is direct cost, rightly answered. Now, cost of goods sold or cost of sales. What सुप्रीत happens? वी कैन से डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो मिनिमम आपको एसेंशियल है बिजनेस रन करने के लिए। अगर आपको कंटिन्यूअस सरवाइव करना है या सर्विस ऑफर करना है तो उतना बैलेंस आपके पास हमेशा मेंटेन होना चाहिए। वी कैन वो से भी, यस, वो भी और थोड़ा सा और ज्यादा, रीजन भी कि अगर हमने बताया कि सिर्फ लेबर से काम हो जाएगा क्या, तो नहीं होगा। मे बी आपको एक फैक्ट्री प्रेमाइसिस चाहिए, आपको एक मशीनरी चाहिए, बट रॉ यू कैन रिड्यूस मटेरियल इट। ये सारी रॉ चीजें। मटेरियल, रॉ मटेरियल, लेबर, जनरली अगर आप डायरेक्ट कॉस्ट की बात करते हैं तो उसमें तीन कंपोनेंट बोले जाते हैं, या दो कंपोनेंट बोले जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, वो होते हैं रॉ मटेरियल्स एंड लेबर। क्योंकि ये दोनों ही डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट में होते हैं। अगर हम बात करते हैं, हमारे सामने एक चीज अवेलेबल है जो हम आपको दिखा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इस कैलकुलेटर की, अगर ये आपको दिख रहा हो तो, सॉरी नहीं दिख रहा होगा कैमरे की वजह से, एक कैलकुलेटर हमारे पास अवेलेबल है। इस कैलकुलेटर में अगर हम बात करें, जब कैलकुलेटर कंपनी ने ये बनाया होगा तो उन्होंने कुछ कीज खरीदी होंगी, एक सोलर चिप खरीदी होगी और एक प्लास्टिक मटेरियल खरीदा होगा टू प्रिपेयर दिस प्रोडक्ट। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ लेबर्स को हायर किया होगा इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अब इसमें जो भी कीस का खर्चा लगा हुआ है, यानी कि जो रॉ मटेरियल लगा हुआ है और जो लेबर लगी हुई है, दैट आर कॉल्ड एज डायरेक्ट कॉस्ट, बिकॉज उसको आप इस प्रोडक्ट में डायरेक्टली देख सकते हैं। उसको आप इस प्रोडक्ट में डायरेक्टली देख सकते हैं कि कीज भी लगी हुई है और लेबर ने इस पे काम भी किया हुआ है, फिटिंग की हुई है और एक रेडी प्रोडक्ट आपके सामने किया हुआ है। बट अगर आप बात करते हैं उस फैक्ट्री की जिसमें ये कैलकुलेटर बना हुआ है, देन वो एक इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगी, बिकॉज उसका प्रोडक्ट में डायरेक्टली कोई
कंट्रीब्यूशन नहीं है, डायरेक्टली नहीं है। बट अगर आप बात करते हैं कि क्या आप फैक्ट्री को हटा देंगे तो प्रोडक्ट बन सकता है, डेफिनेटली नहीं बन सकता। तो इसलिए ये कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा कि हमारे पास सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट रहेगी तो बिजनेस सर्वाइवल के लिए उतनी कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा चल जाएगा। ये कहना थोड़ा सा गलत होगा, बिकॉज यू still need the factory. All the point is that you can at least reduce it, or it is not directly reflected in your product. So that is the whole point. Although अगर हम लोग बात करते हैं कि हमें कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी टू रन द बिजनेस, वो एक आगे जाकर एक मैट्रिक्स आने वाला है, उसके बारे में हम लोग उसमें कवर कर लेंगे, आज ही के सेशन में आने वाला है। ओके, नाउ द moving to the next one. Okay, so here total gross revenue and net revenue is also given. So gross profit, total sales done by the business. Here total sales, like we discussed earlier also, gross revenue is total sales done by the business. Total sales, gross revenue is total sales done by the business. Okay, if I tell you, if there's anybody, I would love to hear your answer. If I'm telling you that in my company there's a monthly recurring revenue also, there's an annual recurring revenue also, how would I calculate my total revenue? Any answers? I have monthly recurring revenue also, I have annual recurring revenue also. How would I calculate my total revenue? If anybody is there, I would love to answer. I would love to hear your answer. Okay, so if I have to answer it, gross revenue would be calculated by multiplying my monthly recurring revenue by 12. Okay, so MRR into 12 plus my annual recurring revenue, because that was the total money generated by my startup or by my company. Now, coming to the net revenue. When we talk about net revenue, it is after adjustments. So it is related, it is after allowances, it is after returns, it is after commissions, and it is after discounts also. That is all indirect cost. Okay. Okay. Now coming back to the discussion of cost of goods sold. So what do we mean by cost of goods sold? Cost of goods sold is the cost that is incurred to sell the product. Okay, not just to sell the product, but the product that has been sold, any cost that is incurred on that, that is called as cost of goods sold. It is direct cost, that is the labor cost, the material cost. So all the material cost and the labor cost that has been incurred to sell the product, or that has been incurred to prepare the product, then it is called as, or it is included as your cost of goods sold or cost of sales. So every cost, every labor cost, or every direct material cost that is incurred to prepare the product which has been sold is called as cost of goods sold. In all of the manufacturing concerns, if you see, I have the particular experience of the automobile industry and the real estate industry. If you see, in all these two industries, in both of these two industries, the major cost is of the cost of production. If you see a car of 10 lakh rupees, the cost of production is of say 5 to 7 lakh rupees only. So it goes beyond 50% also. Now, the next one is regarding profit. This term we all understand, but I would come back to this term later on. Let us first understand the different types of profit, that is gross profit, operating profit, and net profit. And after that, we would come back again to discuss the profit. What do we mean by gross profit? What do we mean by gross profit? So, if I have to tell you what do we mean by gross profit, if anybody is among you is from the commerce background, you must have prepared one trading and P&L account, right? In your class 11th, class 12th. So what happens is, when you prepare a trading or P&L account, and for others I'm explaining, what happens is there are certain costs which are related to manufacturing cost, or which might be called as your cost of goods sold. Now, the classification that we have done so far of direct cost and indirect cost, that would help you here. So out of your revenue, if you reduce all of your direct cost, then that would give you your gross profit. If you would have seen Shark Tank India, I'm sure you all must have seen Shark Tank India. There they ask for GP rate, right? Gross profit rate. What is your gross profit? And everybody and each of these startup tells very high percentage of gross profit. That is, they are able to generate say 60%, 70%, sometimes 90% gross profit also. So gross profit means what? If I give you with the simple, if I explain this with a simple example, gross profit simply means that the money charged by the customer less the cost of goods sold, as in the cost that has been incurred to prepare that product on a manufacturing basis. Okay, not any indirect cost, just direct cost.
So total revenue minus total direct cost gives you your gross profit. Now the question is why this is a major indication, why this is used as a key performance indicator in all of these startups. That is really important for us to understand. Why is it used as a very important indicator in all of these startups? Gross profit. Reason being that when you introduce a new product into the market, when you introduce an innovative product into the market, what happens is you have to incur heavy cost. Okay, you have to incur heavy advertisement cost. Sometimes you hire influencers, sometimes you introduce your product to a large audience through digital marketing. In short, you incur a very heavy advertisement cost, और इस एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को इनकर करने में कई बार ऐसा होता है कि आपका जो बिजनेस है वो शुरू में तो लॉस मेकिंग दिख रहा है क्योंकि यू आर इंकरिंग हैवी कॉस्ट, बट अल्टीमेटली द प्रोडक्ट इज वेरी प्रॉफिटेबल। दैट हैपेंस कि प्रोडक्ट आपका प्रॉफिटेबल है, बट इफ समबडी लुक्स एट योर बैलेंस शीट और पीएनएल, दे वुड फाइंड आउट that your company is actually loss making. But the problem is your product is not loss making, people are paying good amount of money for it. Only thing or only reason behind this loss is that you are incurring heavy advertisement cost. इसलिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है और इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है। इन दिस केस एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आर इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो कि आगे जाकर रिड्यूस भी की जा सकती है और उसका रेवेन्यू से डायरेक्टली रिलेशन अभी है, बट आगे जाकर होगा या नहीं वो अभी नहीं पता है। इट कुड बी रिड्यूस्ड, बट डायरेक्ट कॉस्ट नहीं रिड्यूस की जा सकती। इसलिए प्रॉफिट में तीन पोर्शन हमेशा बनाए जाते हैं। नंबर वन, ग्रॉस प्रॉफिट, जिसमें बोला जाता है कि आपका जो भी टोटल रेवेन्यू है माइनस आपको प्रोडक्ट बनाने में जितना भी पैसा लगता है, जो भी सरप्लस है, दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। एंड इसीलिए आप लोग देखेंगे कि शार्क टैंक इंडिया में भी जितने भी स्टार्टअप्स आते हैं उसमें से मेजॉरिटी ऑफ स्टार्टअप्स का ग्रॉस प्रॉफिट काफी अच्छा होता है। इनफैक्ट 50% से लेकर कई बार 90% तक भी जाता है। आप देखेंगे कि जिस प्रोडक्ट को वो लोग 1000 रुपीज में मार्केट में बेच रहे हैं, हो सकता है उनको बनाने की कॉस्ट सिर्फ 100 रुपीज या 125 आती है। तो जो बचा हुआ पूरा आता है, इमेजिन कि 1000 रुपीज का बेच रहे हैं और 100 रुपीज का बना रहे हैं, तो ये जो 900 रुपीज होता है, दैट इज कॉल्ड एज योर ग्रॉस प्रॉफिट। इन दिस केस ग्रॉस प्रॉफिट आपका 90% हो जाता है। उसके बाद भी जब आप पूछते हैं, जब शार्क्स आगे पूछते हैं कि प्रॉफिट हुआ है क्या, तो वो लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट तो सर हमारा नेगेटिव में है या फिर वी आर बर्निंग कैश। एंड दैट इज व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रॉफिट, डिफरेंट कैटेगरीज दैट आर गिवन टू प्रॉफिट्स। आप एक कैटेगरी में अच्छे हो सकते हो, बट मे बी दूसरी कैटेगरी में खराब हो सकते हो। तो ग्रॉस प्रॉफिट का ये एग्जांपल तो हम लोगों ने समझा जहां पर हम लोगों ने 90% निकाला। अब इसी एग्जांपल को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करते हैं। इन दिस केस आप 1000 रुपीज का प्रोडक्ट बेच रहे हो, 100 रुपीज का बना रहे हो, बट द प्रॉब्लम इज आपको हर एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बेचने के लिए, जैसा शुरू में कुछ फेमस स्टार्टअप्स यानी कि ओयो के साथ भी हुआ था, जोमेटो के साथ भी हुआ था, दे गेव अ लॉट ऑफ फ्री डिस्काउंट्स। इसी तरह आपने देखा होगा मामाअर्थ के साथ भी सेम हुआ था, दे इनकर्ड हेवी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनके साथ ये चीज हुई है कि उनको एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बेचने के लिए बहुत ही ज्यादा पैसे लग रहे हैं। अगर हम मामाअर्थ का आपको डेटा बताएं तो उसमें ऐसा तक कहा गया था कि एक बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन यानी कि लगभग 17 टाइम्स, अगर दे आर जनरेटिंग 1 रुपीज ऑफ रेवेन्यू, देन दे आर मे बी इंकरिंग 17 रुपीज ऑफ एडवर्टीजमेंट कॉस्ट टू जनरेट दैट 1 रुपीज ऑफ रेवेन्यू। ऐसे ही करके बहुत सारे मेट्रिक्स बहुत सारे स्टार्टअप्स के आए थे, और इसलिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रॉफिट होते हैं। इन दिस केस 90% का ग्रॉस प्रॉफिट था, बट इफ आई टेल यू दैट टू सेल वन यूनिट ऑफ दैट प्रोडक्ट फॉर रुपीज 1000, यू हैव टू इनकर और यू हैव टू गिव 1500 रुपीज टू एन इन्फ्लुएंसर। आपके पास इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का ऑप्शन है अभी, और आप 1500 रुपए पर प्रोडक्ट, 1500 रुपए आप उस इन्फ्लुएंसर को देते हो उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए। इन दिस केस आपने 1500 रुपए का तो सिर्फ खर्चा किया और 100 रुपए का बनाने में किया, यानी कि योर टोटल कॉस्ट इज 1600 रुपीज फॉर दैट प्रोडक्ट, उसको बेचने के लिए, और आप रेवेन्यू सिर्फ 1000 रुपीज का कर रहे हो। इन दिस केस आप 600 रुपए के नेगेटिव में हो, 900 रुपीज के प्रॉफिट में हो ग्रॉस बेसिस पर, बट अगर आप नेट बेसिस पर जाओगे, सारे कैलकुलेशंस के बाद जाओगे, देन यू आर एट अ लॉस ऑफ 600 रुपीज पर प्रोडक्ट। बट क्या ये ऐसा हमेशा होने वाला है? डेफिनेटली नॉट। एक टाइम के बाद आपका प्रोडक्ट फेमस भी होगा, एक टाइम के बाद ऐसा भी होगा कि आपकी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कम हो जाएगी, से 1500 से 1000 पर आ जाएगी, 1000 से 500 पर आ जाएगी, और कभी कभी तो ऐसा भी होगा कि आपकी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जीरो हो जाएगी। ऐसा बहुत सारे फेमस स्टार्टअप्स के साथ हो चुका है। जब फिलिप्स इंडिया में आया था, इट इनकर्ड हैवी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, बट आज अगर आप देखेंगे, आप फिलिप्स का एक भी एडवर्टीजमेंट नहीं देख पाएंगे।
जब सैमसंग इंडिया में आया था, उसने बहुत सारे हेवी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट लिए थे, जितना वो अभी करता है उसके 10 गुना किए हैं। बट आज आप देखेंगे कि उसका 10% में ही काम हो जाता है। तो शुरू में नेट प्रॉफिट मे बी नेगेटिव हो सकता है या फिर ज़ीरो हो सकता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नेट प्रॉफिट हमेशा वैसा ही रहेगा। और इसीलिए ये कैटेगरीज़ बनाई गई हैं, ताकि जब आप शार्क टैंक में भी देखेंगे, नोबडी जजेस यू जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट। समटाइम्स नेट प्रॉफिट नेगेटिव होते हुए भी वो लोग आपको फंडिंग दे देते हैं। और उसका रीजन सिर्फ यही होता है कि उन्हें ये पता होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट अगर अच्छा है तो नेट प्रॉफिट को एक टाइम के बाद अच्छा किया जा सकता है। बट अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ही बहुत ज्यादा कम है तो उसको सही करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज आपको अपनी डायरेक्ट कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। अगेन कमिंग टू द सेम कॉन्सेप्ट कि डायरेक्ट कॉस्ट कम करनी पड़ेगी ग्रॉस प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, जो कि पॉसिबल थोड़ा सा कम होता है। आई एम नॉट सेइंग इम्पॉसिबल, बट उसमें हैवी टेक्नोलॉजी लानी पड़ती है, आपको एक नया इनोवेशन लाना पड़ता है, तब आपकी डायरेक्ट कॉस्ट कम हो पाती है। और इसीलिए आप लेंसकार्ट का भी अगर एग्जाम्पल देखेंगे, आई एम जस्ट गिविंग यू दोस फेमस एग्जांपल्स ताकि आप लोग रिलेट कर पाएं। अगर आप लेंसकार्ट के एग्जांपल देखेंगे, पीयूष बंसल का आप इंटरव्यू देखेंगे, तो उसमें आप पाएंगे कि उन्होंने ये बताया है कि उनकी फैक्ट्री इंडिया में भी है, उनकी फैक्ट्री चाइना में भी है, और वो दोनों ही बंद नहीं करते बिकॉज दोनों से उनका ग्रॉस प्रॉफिट अलग अलग है। चाइना की फैक्ट्री उनको ग्रॉस प्रॉफिट अच्छा दे देती है बट नेट प्रॉफिट में कम हो जाती है। इंडिया की फैक्ट्री उनको मे बी ग्रॉस प्रॉफिट कम दे पाती है बट नेट प्रॉफिट यहाँ का बढ़िया है, क्योंकि उनके टैक्सेस जो भी कस्टम ड्यूटीज लगती हैं वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। इसलिए उन्होंने दोनों का मिक्स बनाकर रखा हुआ है। वन एस्टैब्लिशेस देयर ग्रॉस प्रॉफिट, वन एस्टैब्लिशेस देयर नेट प्रॉफिट, और अल्टीमेटली जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आता है वो अच्छा निकल कर आ जाता है। इसके बाद बात करते हैं, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट समझा, अब एक नए प्रॉफिट की बात करते हैं जो कि आप लोगों में से बहुत लोगों को शायद कम नॉलेज होगा या कम आप लोगों ने इसको अभी तक यूज किया होगा एटलीस्ट, वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जैसा कि वर्ड कहता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, अपने रेवेन्यू में से सिर्फ और सिर्फ अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। इसके लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, तो उसको समझ लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब वो एक्सपेंसेस जो आपको बिजनेस ऑपरेट करने में लगते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, यानी कि आपको प्रोडक्ट डिलीवर करना है, डिलीवरी कॉस्ट लगेगी ही लगेगी, दैट इज योर एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बट अगर हम बात करते हैं आपकी जो मशीनरी है वो रिपेयर नहीं हो रही है, वो डैमेज हो गई और रिप्लेस हो रही है, दैट इज नॉट योर ऑपरेटिंग कॉस्ट। आपको रोज उसको रेकरिंग बेसिस पे नहीं लगने वाला है। इसलिए आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट कौन सी है और नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट कौन सी है। अगर आप डिलीवरी करते हो, जैसा कि एग्जांपल में फिर से बताते हैं, अगर आप डिलीवरी करते हो आपको हर डिलीवरी पे वो कॉस्ट लगनी ही लगनी है, दैट इज योर ऑपरेटिंग कॉस्ट। बट देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस व्हिच आर नॉट ऑफ योर ऑपरेटिंग, वो बिजनेस चलाने में वंस इन अ वाइल लगते रहते हैं, एंड दैट इज नॉट योर ऑपरेटिंग कॉस्ट। और इसीलिए बहुत बार आप एक नया वर्ड भी देखेंगे, एबिटडा। आप लोगों ने सुना होगा एबिटडा, एक वर्ड यूज किया जाता है स्टार्टअप वर्ल्ड में, जो कि इस स्लाइड्स में और इस सेशन में कवर्ड नहीं, बट आई जस्ट थ्रो सम लाइट ऑन इट। EBITDA is just a reflection of your operating profit because EBITDA stands for earnings before interest, tax and depreciation। और ये तीनों ही चीजें वो हैं जो आपको बिजनेस रन करने में रेगुलर बेसिस पे नहीं लगती। इंटरेस्ट जरूरी नहीं कि आपके बिजनेस का पार्ट हो, आप उसको एडिशनली देते हो टू गेट द कैपिटल। टैक्स आप प्रॉफिट पर देते हो, बिजनेस रन करने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, हर सेल पर इतना टैक्स लगता है, एक प्रॉफिट का एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है, आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है। सिमिलरली डेप्रिसिएशन आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है, और इसीलिए एबिटडा को ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक अच्छा इंडिकेटर माना जाता है। और इसलिए आप देखेंगे स्टार्टअप वर्ल्ड में बहुत बार बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, आपने देखा शार्क टैंक में भी वो लोग कॉमन क्वेश्चंस नहीं पूछते, हर किसी से ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पूछते, हर किसी से नेट प्रॉफिट नहीं पूछते, हर किसी से एबिटडा नहीं पूछते। इंडस्ट्री को देखा जाता है और उसके बाद देखा जाता है कि कौन सा सबसे ज्यादा एप्लीकेबल है। जैसे कि अगर हम बहुत ही ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में जाएंगे जहां पे हैवी मशीनरीज लगती हैं, वहां पर एबिटडा इज द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कि आप इंटरेस्ट देने से पहले, क्योंकि आपने बहुत सारा लोन लिया होगा तो आप इंटरेस्ट देने से पहले, और आपका बहुत सारा डिप्रिसिएशन भी होगा क्योंकि आपने बहुत हैवी मशीनरीज लगाई हैं, तो आप इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन देने से पहले कितना पैसा कमा लेते हो वो बता दो। बट यही जब हम कोचिंग इंडस्ट्री में आते हैं तो इबिटडा एक इंपॉर्टेंट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर नहीं रह जाता, बिकॉज आई एम नॉट पेइंग मच ऑफ द इंटरेस्ट, आई एम नॉट पेइंग मच ऑफ द डेप्रिसिएशन। एंड दैट इज वाई इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पर क्या लगता है। कोचिंग इंडस्ट्री में अगर हम अपना एग्जाम्पल दें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि आप कितनी फीस चार्ज कर रहे हो और आप टीचर्स को पे करने में कितना पैसा बचा पा रहे हो, डेट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। क्योंकि
कोचिंग इंडस्ट्री में भी आपको बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट लगती है, एटलीस्ट शुरू में। Supreet, we have a few more topics if we can cover quickly because we have last डेफिनेटली 10 minutes. Yeah. डेफिनेटली डेफिनेटली। सो यहाँ पर आपको ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा प्रॉफिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने प्रॉफिट मार्जिन बताया, सिंपल है, जितने भी प्रॉफिट्स को हम लोगों ने समझा, यदि आप उसको डिवाइड करते हैं टोटल रेवेन्यू से, यू विल बी फाइंडिंग अ परसेंटेज। से ग्रॉस प्रॉफिट हमारी केस में था 900, 1000 माइनस 100, 900 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज 90%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे केस में हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया था, बट अगर मानकर चलते हैं आपको 500 रुपीज का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, देन योर 50% इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। एंड नेट प्रॉफिट हम लोगों ने बात की थी नेगेटिव में था, यानी कि वी आर इंकरिंग 1600 रुपीज ऑफ कॉस्ट टू सेल 1000 रुपीज ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज माइनस 60% इज माई नेट प्रॉफिट। तो अगर आप इन तीनों को देखेंगे हमारे एग्जाम्पल में, तो ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिसाइन करना कि आपकी इंडस्ट्री कहाँ पर है, जहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट इज द इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, या नेट प्रॉफिट इज द इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। अब इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है विच इज क्वाइट सिंपल। तो इसको हम लोग क्विकली पूरा रीड तो नहीं करते, बट हम जस्ट आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें ग्रॉस रेवेन्यू 100 है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। नेट रेवेन्यू, ग्रॉस रेवेन्यू का इंडायरेक्ट कॉस्ट माइनस किया आपने, इंडायरेक्ट कॉस्ट को माइनस करने के बाद जैसा हम लोगों ने बताया था, नेट रेवेन्यू होता है। इंडायरेक्ट कॉस्ट मतलब आपका डिस्काउंट हो सकता है, सेल्स रिटर्न हो सकता है, वो 85 करोड़ है। और इसीलिए आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है वो टोटल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टोटल रेवेन्यू में से अगर आप सिर्फ अपनी डायरेक्ट कॉस्ट हटा दोगे, दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट, वो की 60 करोड़ है। इस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि मार्जिन क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 60 करोड़ डिवाइडेड बाय 100 करोड़, दैट इज 60%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो देखिए आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को यहाँ पर ऐड किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस डेप्रिसिएशन। यहाँ पर 37% है। अगर आप बात करें 37 करोड़ डिवाइडेड बाय 100, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 37% हो जाता है। और सिमिलरली अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें, जिसमें सारे खर्चे, इंटरेस्ट और टैक्सेशन भी, हमने आपको एबिटिडा बताया था, देखिए इसमें इंटरेस्ट और टैक्सेशन जोड़ दिया गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद। ठीक है, इसमें आपका आ रहा है 30 करोड़, दैट योर नेट प्रॉफिट मार्जिन इज जस्ट 30%। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक और एग्जांपल है विच इज नॉट वेरी मच सिग्निफिकेंट, यहाँ पे बस कैलकुलेट किया गया 60, सॉरी सेम एग्जांपल है, बस कैलकुलेट किया गया जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया, 60%, 37% एंड 30%। ओके, नाउ ईबीआईटी एंड एबिटिडा ये हम लोग समझ चुके हैं। ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एंड एबिटिडा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, depreciation एंड amortization। depreciation एंड amortization आर वन इन द सेम थिंग। depreciation फिक्स्ड एसेट्स पर लगता है, टेंजिबल एसेट्स पर लगता है, एंड amortization इंटेंजिबल एसेट्स पर लगता है, पेटेंट्स पर, ट्रेडमार्क्स पर। इसमें और कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम कैलकुलेशन, सब कुछ सेम। और ये हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं एबिटिडा का मतलब। अब आगे आते हैं एवरेज रेवेन्यू पर कंज्यूमर पे। तो एवरेज रेवेन्यू पर कंज्यूमर कैसे निकालेंगे हम लोग का जो भी टोटल रेवेन्यू है, चाहे वो मंथली हो चाहे वो ईयरली हो, यानी कि एमआरआर प्लस एआरआर, एमआरआर इंटू 12 प्लस एआरआर, जो कि हमारा टोटल रेवेन्यू होगा, उसको हम लोग अपने टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर से डिवाइड कर देंगे और हमारा एक एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। जैसे कि हम लोग करते हैं, अगर हम लोग बास्केट लेने गए, एज एन हम लोग अगर किसी डिपार्टमेंटल स्टोर गए हैं और हम लोगों ने बोला कि हम लोग ने 1000 रुपीज का पेमेंट किया है प्रोडक्ट खरीदने के लिए, और हम लोग लगभग 20 प्रोडक्ट ले आए हैं। अक्सर हमारे घर के जो बड़े होते हैं वो कहते हैं कि दीज प्रोडक्ट्स आर वेरी एक्सपेंसिव, तो हम लोग ये बोलते हैं, खासकर गारमेंट्स में ऐसा बहुत ज्यादा होता है, जब डिस्काउंट्स होते हैं हैवी, तो हम लोग जाते हैं और हम लोग बोलते हैं कि हम लोग लेने तो एक शर्ट ही आए थे, बट हम लोग 4 लेकर आ गए। और घर वाले बोलते हैं कि व्हाई डिड यू परचेज 4 व्हेन यू वेंट टू परचेज 1। और हम लोग बोलते हैं कि हम लोग लेने गए थे 2000 रुपए की, बट देखिए 3000 रुपए में हम लोग 4 ले आए, यानी कि हमारी एवरेज कॉस्ट सिर्फ 750 रुपए की पड़ी है। यानी कि टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, इन दिस केस नंबर ऑफ कस्टमर्स। और इसलिए आपको एवरेज रेवेन्यू देखना बहुत जरूरी है। अगर एक कस्टमर को एक्वायर करने में आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट लग गई है, पर दूसरे कस्टमर में बहुत इजीली आ गया विदाउट एनी इंकरिंग एनी कॉस्ट, देन यू शुड लुक एट योर एवरेज कॉस्ट। आपको एक एक कस्टमर के ऊपर नहीं जाना चाहिए और एवरेज कॉस्ट देखनी चाहिए। अगर आपने 30% देखी थी कि 1000 रुपए का प्रोडक्ट बेचने पे हम 30% तक तैयार हैं, तो 300 रुपए तक आप ओके होने चाहिए। आपको ये नहीं देखना है किसी कस्टमर पर 100 लगा है, किसी कस्टमर पे 50 लगा। नाउ कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो हम लोग ने डिस्कस किया, उसका मतलब सिर्फ इतना होता है। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का मतलब कि आपने साल भर में कितना ज्यादा पेमेंट कर दिया इन दी एडवर्टीजमेंट, या कस्टमर को एक्वायर करने के लिए डिस्काउंट्स में, एडवर्टीजमेंट में, किसी भी तरह से कूपन्स देने में आपने कितना खर्चा कर दिया। अगर आपने 1 करोड़ रुपए खर्च किया है, थोड़ी बड़ी बात करते हैं, अगर हम लोग ने 1 करोड़ रुपए खर्च किया है कस्टमर को एक्वायर करने में, और 1 करोड़ रुपए खर्च करके हम लोग सिर्फ और सिर्फ 100 कस्टमर को ला पाए हैं, यानी कि हमारा जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो 1 लाख रुपीज है। ये स्टार्टअप में भी, ये शार्क टैंक में भी आप देखेंगे बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आपका कैक क्या है। कैक बोल
एज इन कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का मतलब ये होता है कि आप एक कस्टमर को एक्वायर करने में कितना खर्चा कर देते हो। जोमेटो ने शुरू में 500 रुपीज तक भी खर्चा किया एक कस्टमर को एक्वायर करने में। कस्टमर ने ऑर्डर किया 50 रुपीज का, फिर भी जोमेटो ने डिलीवर किया, 500 रुपए की डिलीवरी उसको लग जाती थी एवरेज में, ये एक रिपोर्ट में बताया गया था। फिर भी उसने वो खर्चा किया, क्योंकि अब हम लोग की आदत पड़ चुकी है ऑर्डर करने की, एंड अब उसको वो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट रिकवर हो चुकी है। तो कई बार शुरू में आपको कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है, और ये इंपॉर्टेंट मेट्रिक इसलिए हो जाता है उन इंडस्ट्रीज के लिए जो कि कस्टमर D2C में है, जो कि डायरेक्टली कस्टमर से डील कर रही हैं, उनके लिए। अगर हम अपनी बात करें कोचिंग इंडस्ट्री की, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा ये चीज एप्लीकेबल हो जाती है कि हमें एक स्टूडेंट को एक्वायर करने में, अपने पास बुलाने में कई बार फ्री डेमोज देने पड़ते हैं, कई बार फ्री सेशंस तक देने पड़ जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत हाई पहुंच जाती है। बट दैट डज नॉट मीन कि वो हमेशा हाई रहने वाली है। एक बार स्टूडेंट हमारे पास आया, देन चाहे वो सीए करे चाहे वो एसीसीए करे, वो हमारे पास ही आता है, और इसी वजह से कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। बात करते हैं यूजर रिटेंशन की। आप लोगों ने शार्क टैंक में भी ये चीज देखी होगी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है यूजर रिटेंशन, यानी कि आपके पास कितने कंज्यूमर्स वापस आते हैं आपकी वेबसाइट पे। कई बार लोग बोलते हैं 30%, कई बार लोग बोलते हैं 50%, विच इज कंसिडर्ड वेरी गुड। यानी कि अगर 100 लोगों ने आपसे पहली बार प्रोडक्ट खरीदा और 50 आपके पास वापस आ गए कि हमें फिर से ये प्रोडक्ट चाहिए, तो वो एक बहुत ही अच्छा रेशियो कहलाता है। और इसीलिए आपको ये समझना है कि आपके कस्टमर, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला सिंपल सा ये होता है कि आपके कस्टमर आखिरी में कितने हैं, आपके कस्टमर आखिरी में कितने हैं माइनस आपने नए कितने ऐड किए, ठीक है, और स्टार्टिंग में कितने थे, इससे आपको पता चल जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग में कितने थे वर्सेस आखिरी में कितने हैं, उसके बीच में आपको पता चल जाएगा कि यूजर रिटेंशन कितना है इफ यू एडजस्ट फॉर न्यू कंज्यूमर्स। अगर आपके पास 1000 कस्टमर शुरू में थे, 2000 एंड में है, ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास सारे 1000 कस्टमर्स रुके हुए हैं। आपको ये देखना पड़ेगा उसमें से नए कितने जुड़े हैं। अगर आपने साल भर में 500 कस्टमर्स नए जोड़े हैं, यानी कि आपके 1000 1500 कस्टमर्स आपके पास रुके हुए हैं अभी भी। अगर आपके पास 1000 कस्टमर शुरू में है, एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके पास 1000 कस्टमर शुरू में है, आपने 500 इस साल फिर से जोड़े हैं, और अगर आपके पास 1200 कस्टमर दिख रहे हैं, इसका मतलब है वो 1000 में से 700 कस्टमर, यानी कि 1200 माइनस 500 आपके पास अभी भी रुके हुए हैं। आपका रिटेंशन रेट 70% है, विच इज कंसिडर्ड वेरी गुड। एनीथिंग अबव 50% इज कंसिडर्ड एक्सट्रीमली गुड। ओके, इसके बाद बात करते हैं चर्न रेट की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चर्न रेट का मतलब होता है वो कंज्यूमर्स जो आपके साथ टाई तोड़ देते हैं, यानी कि आपके साथ काम नहीं करना चाहते। इस केस में 30%। आपने क्या किया, आपने बोला कि हमारे 1000 में से 700 कस्टमर हमारे पास रुके हुए हैं, जो 30% 300 कस्टमर नहीं रुके हुए, उसको आपका चर्न रेट बोला जाता है। चर्न रेट दो तरह से हो जाता है, एक कस्टमर चर्न रेट और कस्टमर चर्न रेट, यानी कि इस केस में 300 कस्टमर और उन्हीं से जो आपका रेवेन्यू लॉस हुआ उसको बोला जाता है रेवेन्यू चर्न रेट। यानी कि 300 कस्टमर अगर आपको 100 रुपए देते थे, तो 300 इंटू 100 यानी कि 30,000 रुपीज का आपका रेवेन्यू जनरेट आ चुका है। इसके बाद बात करते हैं, ये कैलकुलेट होता है। फिर कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू की बात करते हैं। एक कस्टमर आपको एवरेज में से 1000 रुपए देता है, और ऐसे वो 10 ट्रांजेक्शन करता है। हम लोग बिग बास्केट में क्या करते हैं, 1000 रुपए के नॉर्मल प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, 10 ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, मतलब हम एज अ कस्टमर 10,000 रुपए के साल भर में ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। और अगर हम बिग बास्केट के साथ 3 साल तक जुड़कर रहते हैं, यानी कि हम बिग बास्केट का 30,000 रुपीज का रेवेन्यू करवाते हैं, और बिग बिग बास्केट ये बोलेगा कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू हमारे लिए, मिस्टर सुप्रीत अग्रवाल की जो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू है, वो है 30,000 रुपीज। यानी कि हम 10,000 रुपए का ट्रांजेक्शन करते हैं, साल में से 3 ट्रांजेक्शन करते हैं, और हमारा रिटेंशन पीरियड है 3 साल, यानी कि 3 साल में हम 30,000 रुपीज का रेवेन्यू बिग बास्केट को देने वाले हैं। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां पर जहां पर आपके पास कस्टमर बार बार आ सकता है। इसके बाद बात करते हैं कैश बर्न की, यानी कि आपके पास कैश कितना था और कितना है। अगर आपने बोला कि हमारे पास 1000 रुपए का कैश एंड में बचा है, जबकि शुरू में हमारे पास सिर्फ 500 रुपए का था, तो आपने कैश बर्न नहीं किया, आपने कमाया है। बट अगर आपसे बात की जाती है कि आपके पास शुरू में 1000 रुपए का था और अब आपके पास सिर्फ 500 रुपए बचा, यानी कि आपने 500 रुपए का कैश बर्न किया। जैसा कि हम लोग कैश बर्न का मतलब सीधा समझ सकते हैं इंग्लिश में, वही कैश बर्न का मतलब होता है, यानी कि आपने कितना पैसा जलाया। ओके, इसको मंथली बेसिस पे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर आपने बोला 500 रुपए हमारे साल भर में हुआ है, तो पर मंथ कितना गया है, 500 डिवाइडेड बाय 12। इसके बाद कैश रनवे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हमने बताया था, 1 मिनट लेकर इसको समझा देते हैं। कैश रनवे का मतलब होता है कि आपके पास कितना पैसा अभी बचा है, कितना पैसा आपके पास अभी है, और उस पैसे से आप कितना चल सकते हो। रनवे, रनवे कितना चल सकते हो, कितना दौड़ सकते हो, कितना भाग सकते हो, यही रनवे का मतलब होता है। तो कैश रनवे का मतलब भी यही होता है कि आपके पास एग्जिस्टिंग बैंक में जितना पैसा है, उससे आप कितने टाइम तक चल सकते हो।
अगर हमारा पर मंथ खर्चा 5,000 रुपए का है और हमारे पास बैंक में 60,000 रुपीज है, इसका मतलब ये हो जाता है कि हम 12 महीने तक विदाउट अर्निंग एनी मनी सर्वाइव कर सकते हैं। और यही कैश रनवे का मतलब होता है, और इसीलिए हमने बोला था ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके बाकी सारे रेशियोज अगर बिगड़े भी हैं, आप उसको टाइम तभी दे सकते हो सुधारने के लिए जब आपका कैश रनवे अच्छा है। यानी कि अगर आपके पास एक सफिशिएंट इमरजेंसी फंड है 6 महीने, 8 महीने या 1 साल का, तब आपके पास टाइम है बाकी मैट्रिक्स को सुधारने का। बट अगर बाकी मैट्रिसेस बढ़िया चल रहे हैं और कैश रनवे ही नहीं, आपके बैंक में पैसा ही नहीं टिक रहा है, तो फिर आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए कैश रनवे को हम पर्सनली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानकर चलते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं बैलेंस शीट, पीएनएल और कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर हमें एक को देखकर किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना हो, तो आई वुड लुक एट द कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी कि आपके पास कितना पैसा आता है और आपके पास कितना पैसा जाता है और कितना एंड में बचता है। अगर आपके बैंक में पैसे हैं, तो आप बहुत अच्छा एक रनवे क्रिएट कर सकते हो और बाकी सारे रेशियोज पे एक एक कर काम करके उसको इम्प्रूव कर सकते हो। अगर इसको देखा जाए तो यहाँ से बात खत्म है। सर 1 या 2 मिनट और लिया जा सकता है क्या? Yes, yes, Supreet. You can ओके, conclude with remaining few topics. डेफिनेटली। तो एक ही चीज बची हुई है बस, हमारी यूनिट इकोनॉमिक्स। इसको कंप्लीट करके हम लोग कंप्लीट करते हैं। यूनिट इकोनॉमिक्स का मतलब होता है, आप लोगों ने सुना होगा, एक चीज होती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यानी कि हम लोग ये प्लान कर कर रखना चाहिए हम लोगों को कि हम एक यूनिट से कितना पैसा कमाएंगे। It is equally important to know the total amount of revenue, but it is even more important to know your revenue from one unit। यानी कि आपको सबसे पहले एक यूनिट को डिफाइन करना होता है। यूनिट इकोनॉमिक्स का मतलब होता है, सबसे पहले आप अपनी बिजनेस की एक यूनिट को डिफाइन कर लो। जैसे हमारी केस में एक स्टूडेंट इज माय वन यूनिट। एक स्टूडेंट अगर हमारे पास आता है, दैट इज माय वन यूनिट। आपके केस में, जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा हो, सॉफ्टवेयर के केस में एक सॉफ्टवेयर यूजर जो होता है वो उनके लिए वन यूनिट है। उनके पास जितने सॉफ्टवेयर यूजर आते जाएंगे, उनकी रेवेन्यू बढ़ती जाएगी। आपके केस में वो प्रोडक्ट भी हो सकता है और कस्टमर भी हो सकता है। अगर जैसे एक गारमेंट कंपनी के लिए अगर बात करें, तो एक कस्टमर आकर मल्टीपल शर्ट्स भी ले सकता है, मल्टीपल गारमेंट्स भी ले सकता है। तो आपको ये डिटरमिन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी यूनिट कस्टमर है या आपका प्रोडक्ट है। और इसीलिए आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके बिजनेस के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नए नए कस्टमर्स लाना या एग्जिस्टिंग कस्टमर को मोर प्रोडक्ट्स बेचना। और ये आपको तभी पता चल सकता है जब आप यूनिट्स को समझते हैं। हमारे केस में हम एक स्टूडेंट को सीए और एसीसी एक साथ नहीं करवा सकते। इसलिए हमारे लिए मोर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम मोर एंड मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्वायर करें। वीआरएस अगर आप गारमेंट शॉप में हैं, तो हमारा मोटिव ये हो सकता है, जो जिसको क्रॉस सेलिंग भी बोला जाता है, कि आप अगर शर्ट लेने आए हो तो हम आपको शायद पैंट भी बेच दें, शायद ट्राउजर्स भी बेच दें, शायद कैप्स भी बेच दें। और वहां पर आपकी यूनिट जो है वो पर यूनिट आपकी जो है वो गारमेंट हो जाती है, ना कि कंज्यूमर। इसलिए आपको बिजनेस में ये डिटरमाइन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कंज्यूमर्स कितने हैं, आपकी यूनिट क्या है। अगर वो कंज्यूमर्स में है तो कंज्यूमर्स बढ़ाना है, और अगर आपके प्रोडक्ट्स में यूनिट है आपकी, तो आपको अपने प्रोडक्ट वॉल्यूम बढ़ाना है, चाहे वो एक कस्टमर से हो चाहे वो न्यू कस्टमर से हो। और इसी तरह से हम लोग यूनिट इकोनॉमिक्स को समझ सकते हैं। इसके आगे बात करते हैं एक कैलकुलेशन। तो यहाँ पर बताया गया वन आइटम सोल्ड भी हो सकता है और वन कस्टमर भी हो सकता है। यहाँ पर वन आइटम सोल्ड भी हो सकता है और वन कस्टमर भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर कैलकुलेशन कि आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक यूनिट के लिए, एक बिजनेस के लिए। विद दिस आई कंक्लूड द सेशन। थैंक यू सो मच। Very well covered, Supreet. थैंक यू सो मच। Although this topic is very sensitive and very essential for every startup, क्योंकि डेफिनेटली। at the end startup का जो motto होता है to solve a particular problem with innovation as well as have some profit and the revenue in their pocket. So, डेफिनेटली। dear startup, अल्दो ये जो टॉपिक है, काफी सारे लोगों ने ये जनरल फीडबैक शेयर किया है कि हमें रेवेन्यू समझ में नहीं आता है, हमें कैसे मार्जिन कैलकुलेट करनी है, कैसे रिकरिंग हमें अपना रेवेन्यू निकालना है। और कई बार ये एक जनरल माइंडसेट बन जाता है, इट्स नॉट माय टास्क, हम इसके लिए किसी और के ऊपर डिपेंड होने लगते हैं। बट बीइंग बिलोंग्स टू स्टार्टअप कम्युनिटी, यू मस्ट हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, although you can take help from the expert like CA and other financial expert, but आपके पास एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपने बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ इतने सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन किया। You explain about the monthly recurring revenue, then annual recurring revenue, फिर आपने बताया कि revenue के types, gross revenue, and then उसके बाद आपने profit के बारे में explain किया कि multiple types की profit है। then meanwhile आपने इसको Shark Tank India के example से mention किया कि आपका gross profit अलग हो सकता है, net profit अलग हो सकता है,
देन आपका ऑपरेशनल प्रॉफिट अलग हो सकता है, देन कुछ हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, चर्न रेट, कैश फ्लो, देन योर रनवे, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, टर्मिनोलॉजी है, वो स्टार्टअप्स को पता होना चाहिए. We really grateful to you, Supreet, for Thank you your so much. time And I would like to and add one thing here. I would like to add one thing here that कभी भी दिस इज अ पर्सनल एडवाइस टू ऑल द स्टार्टअप्स, जस्ट अ 1 मिनट एडवाइस, कि कभी भी जैसा कि इस सेशन में भी प्लान किया गया था, ऑल द फॉर्मूलाज आर रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, बट कभी भी आपको किसी भी मैट्रिक्स के लिए किसी भी फॉर्मूले को डिटरमिन करने की, किसी भी फॉर्मूले को समझने की जरूरत नहीं है. अगर आपको समझना है तो आप उसके पीछे का कॉन्सेप्ट जानिए, उसके पीछे का एनालिसिस जानिए. इसलिए जब हमने आपको रनवे बताया तो हमने आपको फॉर्मूला ना बताकर सिर्फ इतना बताया कि आप कितने पैसे के साथ बिना कुछ कमाए आगे बढ़ सकते हो. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको रनवे के फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है. चर्न रेट का मतलब सिर्फ इतना होता है कितने लोग आपके साथ नहीं जुड़ना चाहते, वो कस्टमर चर्न रेट हो जाता है, और उससे आपका रेवेन्यू लॉस क्या होगा, वो रेवेन्यू चर्न रेट हो जाता है. अगर आप फॉर्मूले के पीछे जाते हो, कहीं ना कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस एक बैक सीट पर आ जाता है और मोर ऑफ कैलकुलेशन पार्ट्स आ जाता है. तो इसलिए आपको सबसे पहले फॉर्मूलाज अप्लाई करने से पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए कौन सा मेट्रिक इंपॉर्टेंट है. इस समय जिस भी स्टेज पर हो आप अपने स्टार्टअप की, क्या आपको ग्रोथ चाहिए, या फिर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, या फिर आपको सिर्फ इतना चाहिए कि हमारे कस्टमर्स हैप्पी रहने चाहिए इस समय. इसलिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप फॉर्मूला ड्रिवन ना बने, और आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझ में आए कि क्या हम सरवाइव कर सकते हैं, और अगर आप उस स्टेज को पार कर चुके हैं तो क्या हम ग्रो कर सकते हैं, और क्या हम उससे भी ऊपर चले गए तो क्या हम स्टेबिलिटी ला सकते हैं, और अगर स्टेबिलिटी आ गई है तो क्या हम इंश्योर कर सकते हैं कि डिक्लाइन फेज में हम ना आए गलती से भी. और इसीलिए आपको मीनिंग के ऊपर ज्यादा जाना चाहिए, ना कि फॉर्मूला. ये हमारी पर्सनल एडवाइस हमेशा रहेगी. थैंक यू सो that's मच. very nice advice, Supreet. So we really thanks you on behalf of Jabalpur Smart City and Jabalpur Incubation Center. I'm saying to you a big thanks for your commitment and your time. Thank Thank you you so so much, much, sir. It was Supreet. my pleasure. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you, everyone.